will worship Prabhupada out of 4 these 2 principles. And then rest of principles will be getting the minutes. All together will thank Prabhuji for his wonderful mercy in the form of this experience. And you know that what really, or an experience that what we are supposed to know. Very, very important essential message to Prabhupada. तो बहुत आभारी करूँगी हम सब मिलकर प्रभु का स्वागत करेंगे और फिर वेलकम प्रभु बैठेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे Thank you very much. Sincerely, thanking everyone, and especially today for Anantrupa's family. It's true, 80% of our energy in any day, you know what, how it is spent? 80%. Somebody does no research. In America, they research everything. 80% of calories, generally, an average person, he spends in talking. Sometimes it is recommended to do Mahan Vrat. And you see a lot of energy. People who do Mahan Vrat, when they come out, they're very strong. So the only reason I am able to survive is because of Mataji's and all of you for giving such nice prasadam. So my calories are overflowing. So Sadhu, sadhu. So time is short. We'll start. By now, everyone knows my style. Interaction. You get more out of it then. So Prabhupada gave us everything, and he, in some ways, yeah. Connecting. Like source HDMI. HDMI, huh? Who the connected है? Yes, it's coming. Hare Krishna. So, आवाज आ रही है? Everyone can hear? Yes. Huh? If it is working, then we not. Now it's five without mic. Oh, okay. Hare Krishna. Can you hear me? Yes. What about you? Yes. So, Prabhupada, he left us. Yes. I mean, we can say aphorisms, maxims, sutras. We have Brahma Sutras, we have Prabhupada Sutras here on management. And we can use these 4 sutras, codes, not only for spiritual life, but even in our material lives. As Grastas, like this morning, we were saying that we have to balance everything. So when you go through this seminar, keep in mind that you can use this. Prabhupada's teachings are very universal and very, very practical. So books are the basis, purity is the force, preaching is the essence, and utility is the principle. And the order we will do is books are basis, purity is force, utility is the principle, and preaching is the essence. That will be the order. So today's talk, as you know, I will do, books are the basis. Shastra hamare aadhar hai. And question I have for you, why do we need books? Because books give us a knowledge that Prabhupada, he has written everything in his books. So by reading the books, that's why he said that books are. Come here. Prabhuji was saying in the car that you have read, Brahma Samhita by heart. You have read
most of the books. Very nice. Prabhupada is so pleased with you. Huh? Credit goes to your parents and Prabhupada. So, but in this, still in this age of internet and, Google this and that, why do we need books? Knowledge, but the knowledge you can find everywhere. I was telling, you go to internet and you put in Google is God. There's actually a website, Google is God, and you actually find a picture of Bhagwan Google that you can pray to. Oh. So, why do we go? Generally, why do we go to God? Leave aside Krishna for a minute. Generally, why do we go to God? Different reasons. What are different reasons? Some people. You have one more mic? Oh, honestly. Anyway. That's a visit of the spirit. Some people go in search of something new. Yes. Some people actually want to surrender to the Supreme Lord, and some people they go to Supreme Lord with give and take policy. Yes, exactly. I will give you bhakti. Yeah, you give me my daily bread. And when the daily bread is given by the government for free or reduced prices, then there's no necessity of God. Yeah. So I don't know how we got onto this. So so we need, but we still need books, and they have a very specific purpose. Okay, and the reason is that there's so much knowledge, we do not know what is right, what's wrong. Knowledge तो बहुत है, ज्ञान तो बहुत है, मगर वो असली ज्ञान है क्या? आजकल सबके पास, anyone can put a blog, a website, what else? Facebook, WhatsApp, and you could put anything, and you'll still find hundreds of followers. How many likes, right? 200 likes, 500 likes. So we need books to find what is right, authoritative books. See, when you build a house, the house is as strong as what? Foundation. Foundation. Bona fide books are the foundation for anything. If you're studying management, computer science, doctorate, religion, anything. So, can you, sitting in this audience, can you name some bona fide books that you have used in your life? Chaitanya Charitamrita. Lecture of instruction. In your day-to-day life in school, what do you use? Sanskrit. Yeah. Maths. Dictionary. Dictionary. That's the answer I'm looking for. Yeah, dictionaries. What else? Textbooks. Textbooks. Yeah. Notebooks. No, but there's certain, in every field, I'll just move on because we don't have too much time. We all use for general knowledge, GQ. You go to Encyclopedia Britannica. It may be online, that's true, but it is considered an authority. Encyclopedia Britannica says this. Anyone in medicine? Doctor? Gray's Anatomy, the black thick book. Still, when even doctors get in an argument, something happens, then the doctor says, well, this is what we can. It's like you're saying Bhagavad Gita, we open up the right shloka. Yeah. In engineering, you have
You probably know CRC handbooks. Do you ever use it? Yes. CRC stands for, I think, Chemical Rubber Company, something like that. And they published a whole bunch of, you can find a handbook on chemical engineering, electrical engineering, mechanical engineering, math, stuff like this, a whole series. Very classic books. So the internet has finished everything. And dictionaries, Prabhuji said Oxford, Merriam-Webster for Sanskrit. You know what dictionary is used? Amarkosh, Aptes, and then Prabhupada also quotes, actually worldwide, Monier Williams, Oxford Sanskrit list, said to say we use his. And he devised all this, our pronunciation guide and everything, with the line and dot. It is coming from there. Okay. We always use atlases. Now we have GPS, right? But even Google Maps, I've seen myself. You drive, and it says you go there, and you end up on a cliff, and beyond that is it. That happened to you? So we still have atlases, printed stuff that we can go through. And then these last two are very important, biographies. If you want to know about some person, okay, then people go after biographies. Was that person authorized? So and so forth. And then, does anyone know bibliography? What is bibliography? Finally, I know a little bit more than you do. समझ आया क्या? So we think finally, he knows something we should all know. नहीं मजाक कर रहा हूँ. For your age, you know lots more. Bibliographies are list of references. Have you done a paper in school? You've done papers, thesis? Huh? How is the thesis graded? Who's done master's thesis? Anyone? Paper? So you write a thesis. So the examiner will look at the abstract, a little bit, what's your objective, but then they always go to the end. Look at references. See, in a thesis, a PhD, you're required to do something new. So why do you need bibliography? Something new, that means no one has done before, but still, it's not even copies. The question is, actually, there's nothing really new. We are discovering something more. But what is it based on the discovery? So bibliography, a good reviewer will look at your bibliographical references. So isliye, books are the basis of accurate, pramanik, Prabhupada says, bona fide knowledge. Okay. So, but nowadays, you ask somebody, oh, it is my opinion. I think this is right. And you say, oh, I am right. And, or we went through this example in pandemic, right? So much confusion, chaos. And this virus is not there. This virus will be cured by camphor, or you take this medicine, or you chant this mantra. This will happen, right? And actually, this turned off a lot of young people. And they kept on saying science, science, science. Why science? Because supposedly it is repeatable. It is something that they've experimented, right? Or and this is, but when you have these opinions, right? You are a blind person, and there's a poem. I don't think it's taught anymore. It was written by, I think, Wordsworth, a British poet. It was the blind, 7 blind men and the elephant. Yeah, Prabhupada uses that. Right? Yes. Somebody thought it was a fan.
Somebody thought he was a tree trunk, right? What example? They're partially right. So Prabhupada says, and I think others have said, blind leading the blind, they both fall into a ditch. And गड्ढे में गिर जाएंगे, अंदर दो नहीं जाना आपस में. So based on that, one of the very nice things about ISKCON that other movements do not have is our movement is based on books, authorized books, not on some one person's opinion. I would not give names, but because they've been recorded, but there are many instances and thousands and millions of people are being misled. So we follow books in our daily lives. Yeah? All of you work for companies, right? Yes. When you go, the first thing they hand you is the company manual. Right? But see, but when it comes to spiritual matters, what happens? You have one concoction. Yeah, God is in my heart. Yes. Huh? Why are you telling me? I know God is in my heart. And for that reason, you know what's happening? Actually, because of this reason, especially the young people, the children, the youth, they're turning away from spirituality, they're turning away from God. So in America, there is a very reputable research company, very authorized. The name is Pew, P-E-W. Pews are the the benches that they have in churches. So they mostly research of the current social attitudes and all that stuff on social matters, on religious matters, social, not science and all that stuff. So they do research every 2-3 years. So the research they did in 2017, 2018, got published in that, I think 2019, is that 47% of all the people in America, it has been confirmed also in UK, and then I just read about 3 weeks ago, Times in India was saying in India it's almost the same thing happening. 47 of the people do not believe in any religion. किसी को धर्म पर विश्वास नहीं है. So 53% बचे, 53% left. And those 53%, they found out they were almost all old people like me and some of the others were sitting here. Or let's say over 45. So what does that mean? That our younger generation, you, all of your exceptions, are turning atheists, Gnostic. Okay? I mean, if you look around, you'll see that. Right? Yeah. Huh? In my class, everything is like that. Everything like that? Yeah. Prayer ke samay mein they stand, but otherwise they don't care about God. Like they don't care ki what they're doing. They don't care if they sit there. No. And even when they stand for prayers, you think they're really praying? No, many of the people are laughing. People are- कुछ तो करता है और दूसरे लोग हंसना शुरू करते हैं. दूसरे लोग हंसना शुरू करते हैं और लोग even in the time of the Indian national anthem also, when you're standing, somebody does some noise or something and everyone starts laughing. That is what makes it. So I'm not wrong. Thank you. It's confirming. Confirming, right? And so there are few exceptions, and then it is gone. Take any other. If I give names, then I get in trouble. Then you take any other. And the reason is, why is ISKCON an exception? Why is ISKCON
getting all the young people. You look at all the youth festivals that are held in Vrindavan by Sundar Gopal Prabhu in Delhi, Women festivals, and in Chowpatty, Prerna festivals. Almost 50 devotees are there on Zoom. Oh, which are Hindi में बोल बोलते हैं. हिंदी में है. तो इस्कॉन जो है बहुत आकर्षित कर रहा है यंग लोगों को. Prabhupada also said that my movement is for the intelligent people. हम जो है सोना बेच रहे हैं, कोयला नहीं बेच रहे हैं. Selling gold. And at a gold shop, they only keep 3 people for gas, petroleum. There's a big line. So इसलिए bona fide books are the foundation for anything that we want to do. Please, you take any subject, any project, material, spiritual, commercial, you should look at books. I mean, now, so coming back to religion. Which religion, Hare Krishna, which religion has the most or largest amount of books? Journal. Sanatana. Sanatana Dharma. That answer is very obvious. Does anyone have any idea how much? How many books we have? So we call it Vedic literature, right? Yeah. Vedic literature. So Vedas, how many Vedas are there? 4. 4. How big they are? Very big. Very big. That's why it was divided. Now see your opinion. That's why it was Now you divided. should say, Prabhuji, I don't know. Because honestly, कभी आप रेलवे स्टेशन जाओ, वहाँ व्हीलर बुक स्टॉल होता है ना, ये व्हीलर बुक स्टॉल, you go there, you'll find copies of the Vedas. And they're like, then you find 4, I mean, it may be abridged version, but you find 4, I've seen that, Rig Veda, Atharva Veda, 4. We say the largest one. So it is Vedas or Vedic literature. वो करते हैं 10 अपराध, तो उसमें क्या है कि वेद या साहित्य, वेद साहित्य, उसकी निंदा नहीं करनी. तो so far so good, ठीक है ना. अब वेद का क्या डेफिनेशन, क्या परिभाषा वेद की? Book of knowledge. That which connects us to something. What is the technical definition of the word Veda? Sanskrit. Sanskrit बात कर रहे थे. What does the Veda mean? The word actually Veda means knowledge. Okay. समझे? तो देखिए 4 वेद हैं. कोई फिजिक्स का है यहाँ पर? फिजिक्स पढ़ी है किसी ने? नहीं? नहीं. आप पढ़ी फिजिक्स पढ़ी हो क्या? Yes. What is the physics based on? Classical physics. No. I'm looking for in every class somebody is able to give the right answer. Really, science, physics is part of the science, but physics itself, I mean, there are hundreds of books on physics. Logic. No. Physics, classical physics is based on Newton physics. उसके बाद आए आइंस्टाइन की.
And Einstein is considered still, Newton is very old, and his entire physics theory is based on one equation. Yeah. E is equal to MC square. E is equal to MC square. There is a sutra. Yato Brahmo Jigyasa ya Janmadhyasya is sutra. And we have which book that is based on that? Sure. And how much it has? 18,000. 18,000. So the entire physics is based on E is equal to MC square. The sutra and so many books. So therefore, same thing with our Sahitya, Vedic Sahitya. जो और सब चीजें हैं, पुराण, इतिहास, महाभारत, रामायण, क्या कहते हैं, उपनिषद, और उन पर जो कमेंट्रीज हैं, so it is an ocean. You'll have to believe that आपको विश्वास करना पड़ेगा. And this all things will connect ये जो हो रहा है. तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं Vedas have all the knowledge. वेदों में सारा ज्ञान है. कोई कहे मैंने फिजिक्स से पढ़ी नहीं, सारा ज्ञान है. वेदों में जो है, हरे कृष्णा, वेदों में सारा ज्ञान है और खाली रिलीजियस ही नहीं है. आप सबको मालूम है आयुर्वेद सुना ना है, और फिर और कौन से वेद है? ज्योतिष शास्त्र. हाँ, ज्योतिष है, ज्योतिष वेद, और गंधर्व वेदा है ना, और सब है, और न्याय वास्तु शास्त्र. हाँ, वास्तु शास्त्र है, धनुर्वेद, सब है. कहाँ गए? मैथ्स है वेदस में है, उसका उसके अलग शास्त्र है या कहीं पर छुपा हुआ? श्लोकों में आती है. अब आजकल हिंदुस्तान में बहुत लड़ाई हो रही है. कुछ लोग कह रहे हैं जैसे बकवास है, उधर जो है हमारे और पार्टीज कह रही नहीं, वैदिक मैथ्स पढ़ो. तो सारा, तभी देखिए, जस्ट ए साइड पॉइंट, भारत में, इंडिया में देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पेटेंट्स. इट वाज डिस्कवरीज. उसके मारे हिंदुस्तान जो है, जैसे आई डोंट नो दिस और नॉट, कि अमेरिका में somebody tried to get a patent on haldi, turmeric. The turmeric cannot be used except जो they give in a paste and for this thing. अब यहाँ हल्ला हो गया. तो because सब चीजें हैं, it is only a matter कि हमने उनको डिस्कवर नहीं किया, उनको ढूंढना नहीं. क्योंकि हमारा सिद्धांत क्या है? We cannot create anything. Patents का मतलब कि you have created something, right? आपके पास पेटेंट है क्या? पेटेंट है आपके पास? मेरे पास नहीं. अच्छी बात है. तो देखिए, तो ये जो है, तो सारा है. अब फिजिक्स भी है, मैनेजमेंट भी है ना, इसमें बहुत चीजें हैं. इसका भी तो ये क्या हो गया ये? तो हाउ मेनी बुक्स आर इन द वर्ल्ड? अब जिसने पढ़ लिया स्लाइड बता. हाउ मेनी बुक्स आर इन द वर्ल्ड? हमें आंसर बता दिया तो few numbers I read, but not Okay, so the answer is this. Google का estimate है, Google is God. Estimate is 129 million, माने 12 करोड़ किताबें थी in the year 2010. 2010 में 12 करोड़ किताबें थी. You can check on Google. तो लोग विश्वास नहीं करते मुझ पर, अपनी लगा रहा. तो मैंने, और उसके बाद उन्होंने दूसरा एस्टिमेट किया, another estimate,
2022 में 2022 and they said it is 156 16 करोड़। और इसमें जो छोटी छोटी किताबें लिखी आती हैं, ई बुक्स हैं, ऑडियो बुक्स हैं, जिसपे ISBN नंबर नहीं है। आप देखो कि किताब होता है ISBN नंबर, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कुछ है, उसका ऐसा है, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस नंबर। एंड इट इज ऑल्सो मिसिंग वैदिक लिटरेचर। तो जो रिसेंट है वो चीज अलग, बाकी जो है ना वो नहीं। तो 156 बहुत इट्स अ बिग नंबर है। तो अपना साहित्य में कितनी किताबें हैं? How many books we have? in this Sanatan It's not in the. We have. Bhagavad Gita, Bhagavatam, Mahabharata, right? 5, 6, 7, 8, 10, 10, 15, 20, right? Yeah. Numbers? हैं? कितनी? Last. हाँ, हो गई है। तो any estimate, कोई अनुमान है? Can you see the slides? On Zoom? No, slides नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें हिंदी का है, मतलब। Is there any way? मेरी शक्ल की जरूरत नहीं है। Yes, it can be. Yes. You do that? I don't know. Any estimate? कौन बुक शुरू करे? Start. 10,000, 10,000. 100,000 is only in Mahabharata. All like that we have to show. है? 10,000. 24,000 verses of Valmiki. Ramayana. Uh, 18,000. You're saying that every sloka is like a book, right? Verses. And you get to Any number of pages of verses. So 700. 18,000 Srimad Bhagavatam. What is the calculator के पास? I have a Vedic. 24,000 Valmiki Ramayana. Right, very nice. Ram Samhita only 50. 100,000 Mahabharata. Anyway, we keep on moving. Huh? कि हमारे पास we have really no idea. क्योंकि किसी ने लास्ट मीटिंग में कहा 10 लाख million. That is also million verses were written by Goswami. तो ये अच्छा, आप कोई हिंदुस्तानी बोले, कोई माने रिलीजियस पार्टी का नाम नहीं हुआ, वो कहेगा ये आप बहुत बायस्ड अपना बोल रहे हो। तो sometimes we go to the foreigners, so they're supposed to be unbiased, right? So ये ना, ये थोड़ा busy slide है, but read this. ये इसको अगर वहाँ करो आप, a very conservative estimate done by 2 Indologists. One was German, one was American. That our Vedic literature right now is 10 billion, 1,000 करोड़. किताबें कितनी थी? याद है? क्विज. अभी किताबें कितनी थी? गूगल पर बताए. 156264880. हाँ, और यहाँ पर कितने हैं? 16000. इतना साहित्य है. अच्छा, just 1 second. Let me finish. Then I'll come to you. Thank you for that. And this is known right now. वो कहते हैं कि वैदिक साहित्य इतना बड़ा था कि उनका एस्टिमेट है कि it was 1,000 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़, 100 बिलियन वर्सेस थे. और वो कहते हैं इनका डिस्ट्रॉयड, हम कहते हैं वो लुप्त हो गए, क्योंकि कलयुग आ रहा है तो वो लुप्त हो जाते हैं. शास्त्र समाधि भी सुनते हैं हम लोग, है ना? हाँ, तो लुप्त हो जाते हैं. जैसे गंगा जी बची हैं, सरस्वती लुप्त हो गई, ये नहीं सरस्वती खत्म हो गई. तो
every verse, you can almost write a whole book. So, and this is published. तो ये दोनों साइंटिस्ट जो थे, ये इंडोलॉजिस्ट, एक का नाम था जर्मन जो था वो, you can look up एब्रानाइट करके था, और एक था यूनिवर्सिटी ऑफ अर्वाइन कैलिफोर्निया में स्मिथ करके. तो उन्होंने कहा कि we will just start writing the names, तो नाम लिखेंगे इन सब किताबों का. तो देखिए उन्होंने 40 volumes, 40 volumes, and you can look up some images on the internet, and it's called, you can search Catalogus Catalogorum. एक पुराना भी है और एक नया भी है. ये न्यू कैटलॉगस कैटलोगोरम जो है मोदी जी ने, he started, and there's a national mission of manuscripts. They're really doing it to bring back the authority and our heritage back. There are 42 volumes have been published. मैंने इसके देखेंगे आप, it's in fine print. So नाम है और एक दो डिस्क्रिप्शन है कि काय के लिए कितना साहित्य है. तो आप में से कौन उत्तराखंड के हैं? एनीवन फ्रॉम उत्तराखंड? बद्रीनाथ गए आप? कहाँ तक गए? बिल्कुल आखिर तक गए थे? व्यास गुफा के आगे, व्यास गुफा के आगे. कहाँ तक गए थे? माधुचार्य गॉन देयर. हैं? माधुचार्य गए थे. नहीं आप गए वहाँ से आगे तपो बन जाते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे जा सकते हैं. वो कह रहे हैं गुफा के आगे गए आप? नहीं वहाँ से नहीं गए? अरे तो वो है ना, वो नाव में बैठे आपको वो वहां पर सबसे बढ़िया चीज क्या फोटो है मेरे पास, इसमें नहीं दिखाऊंगा, जहाँ चीन का बॉर्डर है वहां गए कोई यस यस है? हमने देखा था, वहां पे देखा था. अभ्यास की गई। हमारा गाँव में देखा कि आपकी चाय की आपकी चाय की- लास्ट शॉप ऑफ इंडिया वहां पे गए ना? और उससे पहले क्या है, उससे पहले जो है ये गए आपने? यस यस यहाँ पे गया. देखा आप? यस यस गॉन व्यास गुफा। व्यास गुफा. उसके ऊपर है ना ये जी। लिखा व्यास पोथी. पोथी. यस. तो ये इसके पढ़ने से पहले, इवन बिफोर आई रेड दिस व्यास पोथी, लग रहा था मतलब वो जो विश्वास है और अंधविश्वास नहीं है कि यहाँ पर जो है इतनी प्रतिलिपि आती, मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, इट वाज लाइक अ माउंटेन. वो दिखता भी है बिल्कुल पेजेस से. यस यस. आपको जियोलॉजिस्ट क्या है कि दीज आर सेडिमेंट्री, यू नो, द रिवर थी, सरस्वती जो भी थी, उनके लेयर्स. हाँ तो एक चीज मैं बोलना चाहता था, हाँ, इनका क्वेश्चन भी. हाँ बोल. हाँ बोल. जैसे जो वैदिक मैथ्स में क्योंकि किसी के साथ मिलकर जो है हम कोशिश कर रहे थे रिवाइव करने की, तो भाई तो थोड़ा बहुत रिसर्च की, थोड़ा बहुत रिसर्च करी थी हाँ कि क्या क्या जो है मटेरियल अवेलेबल हो. तो मतलब जब थोड़ा करना चालू करा, बहुत लिटरेचर, और एक केनेथ विलियम्स करके जो है हाँ एक मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर कि इंडियन है या इंडियन नहीं है. केनेथ विलियम्स इज लाइक अमेरिकन और ब्रिटिश. साउंड लाइक वेरी अमेरिकन. हाँ हाँ. तो मतलब जो अभी जो प्रमाणिक वैदिक मैथ्स का लिटरेचर अवेलेबल है, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है. तो वो ज्यादा कर रहे हैं ना, और उनका एम ये कि टू डिस्प्रूव, बट दे आर फाइंडिंग इट डिस्प्रूव. और हम लोग तो जो है क्या कहते हैं, बहुत गिर गए. हाँ आप बोलो. Probably I just wanted to ask, like Nalanda University in Yes. UP, destroyed by Aladdin Khilji. Yeah. Millions of books were destroyed, and the place was. And you're right, because the strategy, if you want to destroy a culture, the strategy is to the first thing you do is destroy their literature. तो मिसाल लोग पूछते हैं प्रूफ क्या है आपके पास? What is the proof? वो जला दिया मैंने. आप यही तो जब आप कोर्ट में आते हैं, किसी ने मर्डर किया, एविडेंस नहीं है, तो वो जंगल में मोड़ नाचा किसने देखा? तो ये है कि ये इनकी मूर्खता है
ब्रिटिशर्स की इनकी मतलब है वो मकाल, उसने कहा कि kindergarten book, English book contains more knowledge than all the other Vedic literatures. और हमने सह लिया। और अभी क्या, अभी जो है हिंदुस्तान बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, दे बिलीव दैट। हम ब्रिटिशर्स चले गए, वो ब्रिटिश मेंटालिटी नहीं गई मतलब। तो ये है मतलब मैं गया था, राइट? ये था, ये it was the first what you call wireless Wi-Fi transmission from Vyas Gufa to Ganesh Gufa. Ganesh अलग बैठे थे। तो ये अब क्या हुआ कि अब देखिए हमने खुद ही यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बैठे हैं, जैसे they are doing they're professors of Indian mythology. कभी भी एनी टाइम somebody uses the word mythology, मेरा जी खुद पर्सनली जल जाता है, बोगस था, क्योंकि something not printed, it means it's mythology. Does anyone of your, does your grandfather or grandfather's grandfather, does they have birth certificate printed? तो I mean, they're all myth. सब बंदर से पैदा हुए नहीं, बंदर से पैदा हुए। हम विश्वास करते, तो बायोलॉजी पढ़ाते होंगे तुम, डार्विन्स थ्योरी। I know that there is a theory, but I didn't learn it. Okay, don't learn it. I know that is kind of, it's है ना? तो देखिए क्योंकि और दोष हमारा भी, एक तो संस्कृत में लिखे गए थे, संस्कृत बहुत बड़ी ऊंची लैंग्वेज है, इट इज द ओनली लैंग्वेज दैट कैन बी कंप्यूटराइज्ड, इतनी प्रिसाइज है, हर एक शब्द के 24 रूप है ना, और स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा सकती, मतलब कॉम्प्लेक्स, आजकल तो बच्चे बिल्कुल जानते ही नहीं, और कोई लाइब्रेरी थी सिस्टमैटिक, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन क्या था, ओरल, हिंदी में क्या कहते हैं, श्रुति, एंड दैट इज मोर एक्यूरेट। आप विश्वास नहीं करेंगे, दैट इज मोर एक्यूरेट। व्हाई? अब ये इसका क्वेश्चन आया था, मैं जब बड़ा लड़का है उसको संस्कृत आती है, उसको बात करता, तो उसके आईबीएम ने रिसर्च की थी, एंड दैट्स व्हाई दे हैड द टाइपराइटर। जब टाइपराइटर निकला तो IBM want to promote it, तो उन्होंने आइए, so the IBM जगह है आज, बहुत जगह ले रहे हो तुम, यहाँ आ जाओ। तो IBM ने रिसर्च की, स्पेशली जब, I don't know if you remember, I don't think most of you have seen typewriter. तो टाइपराइटर आया, उसके बाद उनका वो आता था एक वाइट करेक्टेड टेप, जब वो आता था वो वाइट था, तो उसको उसकी सेल करनी थी। हाउ डू यू प्रमोट इट? रिसर्च की कि ऑन एन एवरेज पेज, if you write it or you type it, there are at least 10 mistakes. अब तो वो है ना कंट्रोल डी, अब तो वो कोई स्पेलिंग करता ही नहीं, वो तो कंप्यूटर अपना आप कर देता है वो। और आप मैसेज भेजते हैं ना, ड्यूड जाते हैं, करेक्शन आते हैं, जो है बजाय क्या कहते हैं, आई डोंट नो, गिव आ गया, मैं कह रहा हूँ सपोज्ड टू बी गुरु, गिव लिखा हुआ है, चाहता है। सो यू हैव नो आइडिया, but in oral tradition, the devotees who were here from south में अब भी है कि संस्कृत was so precise, और एक मीटरिंग थी, मतलब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, और उसका ये था कि you say it this way and you say the other way, और अगर if you have forgotten a word, मीटरिंग गड़बड़ हो जाएगी। यदा यदा के यदा यद, और वो सब गड़बड़ हो जाएगा।
And so they would catch that. So oral tradition, that's why they used to learn the shlokas and forwards and backwards. And in that tone, so that tradition was actually maintained. हम विश्वास नहीं करते. We don't trust that. नहीं जी. So the Western Arabian attempts was to discredit and destroy. They almost succeeded. The Western education made this all mythology. कि मनगढ़ंत चीज है. अब देखिए, समझ आ रहा है ना? और कोई क्वेश्चन है? चल रहा है. आपने अपना टाइम क्या हुआ है? मैं तो बोलता जा रहा हूँ. 8 बज गए. We have to late right? वो तो एक पोर्शन. तब देखिए टॉप 10 उपनिषद, राइट? तो टॉप 10 प्रिंसिपल उपनिषद में सबसे वो पहला कौन सा है? ईशोपनिषद, राइट? 18 पुराण है. 6 सात्विक हैं, 6 सात्विक हैं, 6 तामसिक हैं, 6 राजसिक. पुराण नहीं है राजसिक तामसिक. 6 पुराण बनाई गई हैं तामसिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए. तामसिक 6 सात्विक. Which is the topmost पुराण? भागवतम की. ओल्डेस्ट पुराण कौन सी? मत्स्य. अब बहुत से लोग कहते हैं ब्रिटिश वगैरह कि भागवत पुराण तो जो है बहुत अभी लिखी गई है. रूपा जी क्या कहते हैं उसके बारे में? क्या कहते हैं कि नहीं ये गलत है? अब हम विश्वास भी कर लेते हैं. आज जो प्रोफेसर बैठे हैं यूनिवर्सिटी में दिल्ली के अंदर वो विश्वास भी कर लेते हैं. हाँ, और एक और प्रूफ है. इसलिए मैं क्या तो कहते हैं कि they all agree the मत्स्य पुराण is the oldest. मत्स्य पुराण itself refers Bhagavatam in. So how can they refer something that does not exist? मत्स्य पुराण में भागवतम का रेफरेंस है. सबसे पुरानी प्राचीन जो है पुराण वो हमारा मत्स्य पुराण. तो ये तो ये हो गया ना. इतना कितना 10 बिलियन 1000 करोड़. Plants वो तो it's more. हाँ, प्रभु जी कह रहे हैं कि जो भागवतम के रामायण है देवों की वो 3 लाख श्लोक की है. ऐसे कहते हैं वाल्मीकि रामायण यहाँ 24,000 की है, वहां पर 1 लाख से 1 लाख. अच्छा देखिए, आप किसी पूछेंगे ब्रिटिशर से कि विच इज द बिगेस्ट बुक, तो कौन सी बुक बताएंगे? कौन सी बुक इंग्लिश लिटरेचर? बता रहा हूँ आपको, तो कभी कोई चैलेंज करे कौन सी कहते हैं वो? इंग्लिश लिटरेचर. बाइबल. हाँ, पैराडाइज. And that is how much? I think it's like 50,000. और हमारा महाभारत ये खाली 1 लाख था. और उसके बाद क्या हुआ? ये तो पुरानी चीजें है ना. उसके बाद क्या हुआ? हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्य हैं. देखिए खाली 6 गोस्वामी ने अपने आप को कहते हैं रूपानुगाद. उन्होंने जंग माने वृंदावन में चलते फिरते सुबह शाम पूजा करते थे, माला करते थे, सबकी क्या कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, और हर रात कहीं ना कहीं अलग रहते थे. और उसके बावजूद भी डिस्पाइट ऑल दीज, है ना, डिस्पाइट ऑल दीज 10 लाख 10 मिलियन 1 मिलियन वर्सेस लिखे उन्हें. ये टाइप भी नहीं किए, लिखे. और उनमें से जीव गोस्वामी, ही इज द सॉर्ट ऑफ आचार्य उन समय, जिन्होंने खुद अकेले 5 लाख. और देखिए इतने गूढ़ है. राधिका जो बड़ा लड़का है मेरा, रवि गुप्ता, ऑक्सफोर्ड में पीएचडी की उसने, एंड ही गॉट अ पीएचडी just translating about I think 30-40 verses
from Jeev Goswami's, I think Kram या तत्व संदर्भ जो गया, उसके सिर्फ 25 श्लोकों को उसने ट्रांसलेट किया, उनके आचार्य कमेंट्री ली और फिर आपने लिखे, उसी पे पीएचडी मिल गई। कितना गूढ़ साहित्य है। ऑक्सफोर्ड में पीएचडी मिलना आसान नहीं है, एक वैसे चिड़े बैठे हैं, मतलब इट्स मैटर ऑफ फेथ, श्रद्धा। अब भक्तिनाथ ठाकुर ने 75 बुक्स लिखी, मजिस्ट्रेट भी थे, 10 बच्चे भी पाले, क्या नहीं किया उन्होंने। मायापुर ढूंढा उन्होंने, भक्ति सिंह जी आए, उन्होंने 30 बुक्स को और चीजें, सारी बुक्स को पब्लिश करवाया, बृहद मृदंग। एंड देन आवर ओन श्रील प्रभुपाद की जय। अब प्रभुपाद जी ने क्या किया, कौन बता? Bhagavatam, Bhagavad Gita and Chaitanya Charitamrita, English translation and publishing. And he wrote his own books, at least 30 to 40 of his own books. बहुत ही, मगर उसको you see in the larger perspective, प्रभुपाद जी की जो कई एक तरह से मिरेकल है, या कई जो उन्होंने अंग्रेजी में कहते हैं फिनोमिनल, अनडॉन्टिंग, मतलब हम तो इसको पढ़ के यहाँ पे सोच रहे हैं कि हे भगवान, मैंने क्या पढ़ूंगा क्या नहीं पढ़ूंगा, व्हाट आई शुड है। तो क्या है कि उन्होंने, देखिए प्रभुपाद फिनोमिनल फीट, अभूतपूर्व कर्तव्य उनका क्या था कि 10 बिलियन 1000 करोड़ जितनी नॉलेज थी, जितने वर्सेस थे, और जो हमारे आचार्य ने लिखा था, उन सबको उन्होंने बिना घबराए हुए, अनडॉन्टिंग होता है कि आदमी घबरा के बस नदी में कूद जाए या छोड़ चला जाना। He gave us the essence, essence को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? सार। सार से ज्यादा मान, सार का विस्तार of all the knowledge of the 10 billion verses। ये प्रभुपाद जी का चमत्कार। इसको आप मनन करें, you think for just 30 seconds। ये इतना बड़ा मैंने स्टेज इसलिए बताया कि उन्होंने रात भर बैठ के, फिर 2-2 घंटे सो के, only sleeping 2 hours every night, no matter where he was। मैं जेट लैग, मैं खाली 2.5 घंटे का जेट लैग था, यहाँ प्रभु जी के आया, मैं सो रहा हूँ, मतलब मंगल आरती वगैरह साफ कह रहा हूँ, मतलब मैं प्रभु जी मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सारी नॉलेज को ही, जैसे ये क्षितिज कह रहा है, ही कंडेंस्ड, ही गिव। ये नहीं कि उन्होंने कुछ ही छुपा ली, he gave us all that knowledge that we want to have in 60 books। और वो भी ठीक था, संस्कृत में लिख देते, इन इंग्लिश तो हम यहाँ बैठ के, वो कहाँ छोटा भाई कहाँ गया? सिराज inside। Even he can talk intelligently to any philosopher। प्रभुजी कहते हैं जिसने भी मेरी गीता पढ़ ली है, he can talk intelligently and defeat any philosopher in the world। प्रभुजी ने नामुमकिन कार्य किया, it's not possible। तभी प्रभु कहते हैं कि प्रभुजी was almost like Ganesh in some ways। प्रभु जी कहते हैं कि कृष्णा was dictating, I was just writing। उसमें भी बहुत अकल चाहिए। और he wrote it in English। आप सब ऐसे बात करते हैं, भागवत से कुछ है ही नहीं। राधिका जो लड़का है, he is a worldwide expert in Bhagavatam, and he says almost all academicians, संस्कृत जो बैठे हैं सब वहां पर इंग्लैंड में और जगह, देखो ना हैंडल भागवत।
उसकी संस्कृत इतनी है कि उस कहने को संस्कृत जुबान है, बट व्हेन इट कम्स टू भागवतम दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द संस्कृत। वो प्रभुपाद जी ने हमको अंग्रेजी में, in English he gave us so we can talk like we are over coffee table. हम भागवत जी कह रही है, मेरा खुद का दाव माने before even after I came to the movement for the first 2-3 years. भगवत गीता, और ये भागवत में किसी ने जो ए लगा दिया है वो भागवत में सेम है भगवत गीता। कितनों को ये एक्सपीरियंस था? मैं झूठ नहीं बना ना, मैंने भागवत भागवत भगवत आप क्या किया देखिए, आप सब जने जानते हैं, हम करेक्ट करते हैं, सर आर यू डू यू मीन भगवत गीता और भागवतम? पूछा करो, ये समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आर यू रियलाइजिंग? है तुम भी नहीं अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? आई वांट टू कम एट योर लेवल, ठीक है, विद मॉडर्न डे एग्जांपल्स। And so, this is a very nice thing. प्रभुपाद की जन किताब, उनका सबसे को जानते हैं, ये मैग्नम ओपस, कहते हैं बेस्ट वर्क, कौन सा था वो? भागवत। अगर हम इसको पढ़ लें तो our house will be so strong, foundation, books। ये तो प्रभुपाद जी ने किया, तो देखिए उसके अलावा प्रभुपाद जी क्या देखिए, उनकी बायोग्राफी 7 वॉल्यूम्स, उसमें सब कुछ है। अगर भागवत नहीं पढ़ी जाती है आपसे, जब मुझे नहीं पढ़ी जाती है, you have the book भागवत, you have the person भागवत। अब मैंने जहाँ तो उसका प्रभुपाद गीतामृत पढ़ी, अच्छी तरह पढ़ी, उसमें सारी कथाएं हैं भागवतम की, तो नाम बदले में हैं। उनके लेक्चर्स और कॉन्वर्सेशंस, there are 37 volumes of Prabhupada's conversations, 6,587 लेटर्स हैं, उसमें प्रैक्टिकल ज्ञान है। Memories, recollections. How many have you read Transcendental Diary? उनकी उन्होंने जो प्रोफेसर था हॉपकिंस, उसको भेजा था कि टू राइट इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरवर्ड टू हिज बुक, तो उन्होंने भेजा, तो वो जो है भेज दूंगा, 6 महीने हो गए नहीं भेज पाया, उन्होंने कॉल किया, तो हॉपकिंस बोले कि आई एम सॉरी, फिर बोले कि यू हैव मोर इंफॉर्मेशन on the life of Prabhupada, or just 6 months of Prabhupada, जो ऑलमोस्ट 6 महीने कवर किए थे, then we have the entire life of Jesus Christ. ये महाभागवत। तो अब देखिए, अब फिर प्रभुपाद जी he left us a big task. क्या इंस्ट्रक्शन दिया था, जो आप सब यहाँ कर रहे हैं, कि हर एक किताब को बड़ी, ये नहीं खाली नॉवल की तरह पढ़ लिया, स्क्रूटनाइजिंग, इसका हिंदी शब्द क्या होगा मैंने, सूक्ष्मता के साथ। और इन कंपनी ऑफ डिवोटीज वह समझ नहीं आएगी, ऑनेस्टली जूम पे भी इतनी समझ नहीं आएगी। तो भगवत गीता में 700 वर्सेस हैं, तो कितने साल लगेंगे?
कहते गीता को हर श्लोक हर रोज एक श्लोक पढ़ोगे तो स्क्रूटनाइजिंगली 2 years. 2 years ना, सिंपल है। और भागवतम और भागवतम के लिए सम 27 वो तुमने पढ़ लिया, तुमने पढ़ लिया। अब ये देखो ये चीटिंग है, चीटिंग कलयुग, चीटिंग प्रोपेंसिटी 7 years। ये तुम दिखा दिया स्लाइड पहले। अब पिछली क्लास में दिल्ली में किया था, तो वहां प्रभु जी बैठे बैठे जो है हिसाब लगाने में कही अपना सेल फोन निकाल के कैलकुलेट कर लो, फिर भी नहीं हो रहा था। 27 साल There's your application, Prabhuji, by Vastas ke Prabhu, page by page, page by page. So you can put your books and then he'll tell how many days to devote 1 hour or 2 hours like that. चैतन्य चरित्र में क्या कहते हैं, एक डिवोटी हमारे नए नए हैं, उनका कि गुरु महाराज ने कहा भागवतम पढ़ो, आपसे भी कहा, तो उन्होंने ये किया कि मैं हर हफ्ते एक चैप्टर पढ़ूंगा। तो बोले प्रभु जी मुझे 7 साल लगे। चैतन्य चरित्र में 11,500 11,500 वर्सेस, 63 चैप्टर्स। अगर 10 वर्सेस भी किए, चैतन्य चरित्र में इतने पर्पस नहीं है, 3 साल लग जाएंगे। तो प्रभुपाद जी he gave us a solution also, right? In the morning Bhagavatam, in the evening Bhagavad Gita, हम मंदिर कोशिश कर रहे हैं। ये also summary दी मैंने, किसी का गीता पढ़ने का टाइम नहीं है, doesn't have time to read the entire Gita, the introduction to Gita, 33 pages, you get the whole Gita. कृष्णा बुक दी, तो भागवतम का सारा सार कृष्णा बुक में भी है। चैतन्य चरित्र is summarized in teaching the Lord Chaitanya। कितनों ने पढ़ी teaching the Lord Chaitanya? कितने? बहुत। It is an encyclopedia of religion। बहुत सूक्ष्म, बहुत, it is in its own class। तो ये तो यहाँ पर ये तो I'm saying, you know, और फिर भक्त लोग कहते हैं अब ये आ गया ना इसके अंदर कि क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, व्हाट शुड आई रीड। तो स्क्रिप्चर्स कहते हैं, भक्ति ठाकुर क्या क्या कहे, फर्स्ट मास्टर वन बुक and then use that as a reference, read all the other books, you'll be much better off। आप जो है ज़्यादा आएंगे। In some ways, कभी Bhagavad Gita is good। Bhagavad Gita is theory, right? Bhagavatam is what? और चतुर्वेद क्या है? It's the heart of It is an application how one devotee, Chaitanya Mahaprabhu, applied. he did his life based on Bhagavatam। That is the order। You don't understand theory, practical कैसे कर पाओगे? And if you master the Bhagavad Gita, I'm defending myself। मैं Bhagavad Gita भी क्या प्रभुपाद जी की लीला में थी, मैं Bhagavad Gita भी है। When I go to Bhagavatam, when I read that, the verse from Bhagavad Gita jumps out। Bhagavad Gita ये कह रही है, Bhagavatam ये। And when you read Chaitanya Charitamrita, you say, oh, Chaitanya Charitamrita, Mahaprabhu reply करना। तो इसलिए तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, और जैसे क्या कहते हैं, गिरिराज स्वामी ने एक बार कहा था कि प्रभुपाद ने कहा था कि if you just read the character of a Mahabhagavad, that is sufficient। So based on that, this is my personal appeal to everyone, please read and imbibe। पढ़िए प्रभुपाद जी की लीला में। ये सारी बुक्स को हम तभी अप्रिशिएट कर पाएंगे when we appreciate the author। ये होता ये लिख दिए।
तो देखिए बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। तो भागवतम सेज महाजन ये गति पंथा, हमारे महाजन कौन है जिसके रास्ते पे जा रहे हैं? प्रभुपाद की जय। Follow Prabhupada's instruction. Master one book, read Lilamrit. Stop saying I think so. कभी भी मैं भी कभी की बहुत कम हो गया, तो किसी और डिवोटी सुनता हूँ, मेरी ओपिनियन ये है, your opinion might be who's right. Accept Prabhupada's instruction in totality. You need to pick and choose. That is the end of it. Quick question, quick comment. Prabhuji, the point on master one book and then go to others. Is there anything specific book or can be chosen? And what this exactly means, like mastering a book? What it means? Good question. जैसे मैंने कहा, अब that is मैं पकड़ा जाऊंगा, it's my opinion है, ये my अनुभव, self realization कि गीता और प्रभुपाद लीलामृत, even the condensed version of लीलामृत, not the sermon one. You read that, you understand that Bhagavad Gita, and it does not mean that you have to read the entire Bhagavad Gita. Even if you do have the Bhagavad Gita, that becomes the basis. And what that means that you read the purpose. तात्पर्य पढ़िए. प्रभुपाद ने एक जगह लिखा है, my purports are more important than the translations. तो सुषम जब नया भक्त में आया था, तो मैं बहुत भ्रमित हो गया. देखिए भगवत गीता कितना टाइम लगा था भगवत गीता बोलने में? कितने? 2 years, one verse. 45 minutes. अर्जुन जब कृष्ण बोला 45. 48 straight minutes it was done. 48 minutes. Thank you. आपसे मैं काटूंगा 48 minutes. The entire Bhagavad Gita, if you do the 10 size font, 10-point font, it can be printed in, I think, 2.5 pages. And people take years, lifetime to understand that. It is a conversation between two intelligent people. अब बहुत से लोग जाते हैं MIT, है ना, कोई इंजीनियर को बना है, उनका गोल है कि MIT जाएंगे. मैसेज टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे बड़ी जो है मानी जाती है ना, MIT सुना ना? तुम इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, क्या बनोगे? अब सोचा नहीं. तो एक से मैंने पूछा था, वो MIT क्या था, तो वो MIT के में सारे प्रोफेसर नोबेल प्राइज विनर हैं ऑलमोस्ट. तो आपस में हॉल में बात करते हैं ना, जैसे हम प्रभु जी बात कर रहे हैं, आप में खड़े सुन रहे हो, है ना, तो आपका इंटेलिजेंस सब समझ आता है. मतलब ये होता है, जो दो बड़े बड़े भक्त गुरु या नोबेल प्राइज में बात करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, दे टॉक इन कोड, सूत्र, इन हाफ सेंटेंसेस. और जो स्टूडेंट है वो बेचारा खड़ा रहता है कि क्या बोल सब सही बोल रहे हैं. मेरा कैंसर स्टेट यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने गए थे, तो एक जापानीज प्रोफेसर था, एक जापानीज, उसके अंग्रेजी मतलब वो आके जो है हाथ उठाए, you understand? अरे अंडरस्टैंड. इसलिए you need someone, जो दो इंटेलिजेंट पीपल बात कर रहे हैं, to explain कि क्या बात कर रहे हैं वो. That's the purpose. तात्पर्य इसका में, the purpose. He is saying what Krishna is saying, because there's one more complication. Every Sanskrit word has a minimum of how many meanings? No, वो तो आप की बात करते.
Nirukti. At least 4. A meaning in the mode of ignorance, tamasic mining, rajasic, passion, sattvic. और एक चौथा मीनिंग क्या है? Transcendental. तो हाउ डू नो कि उसमें कृष्णा किस कौन सा मीनिंग की बात कर रहे हैं? अब जैसे आप ये पढ़ रहे हैं, बताया था आत्मा नाम वर्ड्स पढ़ रहे हैं, सब समझ आ गया, मुझे अब नहीं आया। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु कितना बने? चैतन्य चंद्र को 64 वो मिनिमम है। और चैतन्य चैतन्य में पढ़ने की कोशिश की तो 50-60 पेज है। आई कुड नॉट फिगर आउट, मतलब इसलिए तात्पर्य पढ़ना बहुत जरूरी है। और उसके बाद भी बहुत जरूरी से उन्होंने किताब लिखी है, एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रभुपाद्स पर्पस। इसलिए प्रभुपाद जी में बहुत कुछ देंगे, हम उसका पूरा फायदा नहीं। प्लीज उसमें सारा ज्ञान है। कुछ कहते हैं भागवतम का भी है, वो जानते थे कि बहुत लोग भक्ति पाएंगे, उन्होंने कहा कि आई हैव इवन समराइज्ड ऑल द नॉलेज ऑफ भागवतम इन द फर्स्ट 2 कैंटोस। तो आपका क्या क्वेश्चन था, भूलिए। मास्टरिंग है तो यू मास्टर समथिंग दैट इज मैनेजेबल। उसके बेसिस पर आप यू मास्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ भगवत गीता 35 pages. So maybe we should end the session here. Yes. 8:35. Okay. We can take some questions. और कोई क्वेश्चन है? Prabhuji, you said this certain percentage, significant percentage of populations in US and they're atheists, Gnostic. Is it true that in India or in Sanatan Dharma, Gnostics were also considered as Hindus at some point of time? I have heard like this. Like we included everyone. Actually, in India, yeah, only so recent. I don't think there were Gnostics. अब ये मैं I think कह दिया, क्योंकि if you read the Indian, they were demigods and they were danavs, demons now. So demons were also very intelligent. They believed in Vishnu, but they believed him as an enemy. Right now, more, and this is a fact. मैं कहाँ बता रहा था, I don't think I said it here. In America, you know, Boise Temple, it is a tradition. I used to conduct Ram quiz for the whole families. It's almost like competitive for a Sunday feature, as close to Ram, you know, Ramnami, or sometimes Diwali also. To answer a simple question, till 10 years ago, everyone was able to answer who is Ram, who is Sita, and the 3 brothers. Now, gradually, maybe the parents know Ram or Lakshman. The average parent cannot tell the other 2 names. और अब बच्चे तो बिल्कुल ब्लैक नहीं। Ram? Is somebody there from Andhra? Yeah. From what I know, officially the government of Andhra has ordered that in all the schools, any reference of Ram and Krishna should be taken out from all the books. So we are now developing a generation which does not know. That's very sad. You accept it?
Therefore, it's very important. So Prabhupada ji जानते थे, Prabhupada knew them to distribute his books. They could not. So now, yeah, it's not a question of Nastic, they do not know. There's another word. You have atheist, Nastic, and you have Astic or theistic. एक शब्द और है, that is called agnostic. इसका हिंदी नहीं मालूम मुझे, but they're searching. तो अब ये हो गया, they're not even searching. वो कह रहे हैं there's no God, साइंस आ गई है. और कोई प्रश्न? In the book written by Bhakti Damodaran Swami Maharaj. हाँ, It's not on scientific basis. Krishna consciousness. I'm missing link. Yeah. In that, he is mentioning about one incident when he was in NASA. One of the scientists, they viewed satellite and they were there. After some time, the signal was missing. And then their spokesperson, he has to come out and he has to update the country. Like what is the latest news with it. So when he came, the first word he used, peace pray for that. So although the NASA is based on their atheists, right? They don't, but Maharaj is there is stressing on the point of like nobody is basically atheist, but because of their purpose, they are just acting like they are atheists. But when the time came, so the very first word when he came out to the public, he said, "Please pray for them." Prabhupada ji कहते हैं ना, such as the Krishna is in every heart. Yes. You have to awaken him. ऐसे माला करता है पूरी तरह से तो Okay. Yes. Sorry, आपने सब कुछ ये सब बताया, सब practically everything. But how to increase that volume for these books? Because practically we are doing everything and doing these busy schedules and everything, but we can't focus on that. So how that should comes from our heart? So please explain that. That Can someone help me? Can I absolutely unqualified, disqualified. I asked for help. I'll just tell you a little. तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब हम जो भी हम पढ़ते हैं और it's not about volume, it's about हमने एक श्लोक पढ़ा और जब हम उसके बारे में मनन करते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं, then we start making connections in various scriptures and also connections in what we see. And then suddenly things start अनुभूति होने लगती है. तब सब suddenly जो है तो रोलियम वहाँ से आता है. The moment you start kind of connecting the dots and suddenly in terms of the bulb lights, and then you say, wow. Very good. But in the beginning, that's what I was saying. First, you have to, you have to appreciate the author. तो लेखक है, उसको appreciate करिए. तो सारे scriptures कहते हैं, भगवान खुद कह रहे हैं गीता में, you have to read in the association of devotees initially. स्वाध्याय है, Prabhupada said, self-study है. And he says you spend 2 hours doing that, if not 2 hours, at least 1 hour. Because that will not be successful. That is like reading mechanically. Till we sit down in the association of devotees and see, hopefully we have achieved that today after today. Hopefully all of you or some of you now is going to say, oh, let me read this book. And then all our scriptures, you know how all our scriptures start?
how do all the scriptures start? At least Bhagavatam and Bhagavad Gita. How do they start? Huh? No, वो तो हुआ invocation. How does it start? Huh? Question. A plus दे दीजिए. Simple the question. Bhagavad Gita. What did they do? Bhagavatam किससे होती है? 6 questions. 6 questions. So asking questions is not bad, but when you read and you have a question that comes in, and when you get the answer, तो aha, the bulb lights up. वो आँख कहाँ से आता है when you talk to a devotee? हैं? YouTube और ये Zoom पे मैं तो विश्वास नहीं करता. It's very important. मुझे श्लोक नहीं आते हैं. थैंक यू. वही कह रहा हूँ तो ये सब जगह है. प्रति प्रश्न वो क्या है? परिप्रश्न 434. चतुर्श्लोकी में है वो. Yes. एसेंस वॉल्यूम वहां से आ रही. क्योंकि आई एम माइसेल्फ सरप्राइज्ड. It's not question कि senior junior sit down. तो सरस्वती माँ she sits on our tongue. I didn't see that point. Prabhuji. बहुत बढ़िया point है. हाँ मैं भी इसका it has to be done like that. Very good question. All good question. Sorry, at very beginning of the session, you mentioned 20% of energy were losing on talking. So how to reduce sense stop or Nectar of instruction में I think right in the beginning Prabhupada writes about India में fashion है मौन व्रत. So, but what is going in your mind? तो Prabhuji कहते हैं कि मौन व्रत means to stop talking all nonsense, Prajal. But talking about Krishna 24 hours a day is Maun Vrat, is good use of the energy. I can talk like this as long as after you keep on feeding me prasadam. You can do it all. You mentioned Srila Prabhupada on his purpose or on he just referred all the verses. Some you mentioned all the verses Srila Prabhupada he was not and he was fixed and he wanted to go through all that. And then we can understand that he supports all this knowledge of all the verses. The scriptures is there. The same thing when we are understanding like Brahma Shastra Vichara, there were 6 Goswamis, they go through all that all. So how we have to understand means like our 6 Goswamis, they already worked on that and they have given the essence of Brahma Shastra Vichara. So Srila Prabhupada, addition to what was 6 Goswamis they have given. So how we can understand that contribution of Srila Prabhupada? The Prabhupada, he always used to say, आजकल बहुत फैशन है to do something original. And Prabhupada, what did he say? We are in the business of repeating. But he repeated with modern examples. Shastra में अगर लिखा है कि, you know, they went on a bullock cart. You know what bullock cart is? No. It's okay, don't defend it. All right. I didn't mean to say no, bro. It's okay. I know what it is. No, but therefore he used the word car. He used the word car. And maybe the next generation, maybe they'll use the word drone.
The other qualification of Prabhupada, unlimited, that any other modern day Acharya does not have it. He was a master of what? Desh, Kal, Path. He had that. Krishna gave him the unique ability to write based on time, place, and circumstance. The other authors, they're referring Arjun this, to do that. Or Tabi, the young people, I get this question all the time. Prabhuji, वो गीता तो 5,000 साल पहले लिखी थी, हमारे लिए कोई मतलब नहीं। ना वो रथ रहे, ना वो ब्रह्मास्त्र रहे, आपको कुछ मालूम नहीं है। कार खराब हो जाती है, ये स्कूटर रहेगी। My comeback is Gita is ever fresh. Prabhupada writes it. We know it. How many of you have read the first chapter of Bhagavad Gita? Right? What did you get out of it? We get the problem, the question that I don't want to fight because Arjuna has compassion for his relatives and he asks Krishna, Krishna, what are we supposed to do? But what is the first chapter of Bhagavad Gita? And I don't expect you to have the whole answer. That answer is there, but there's something else I'm expecting. मैं सबसे कहता हूँ Observation. है. He's giving the scenario, setting the stage of the society. है ना? And work quote unquote 5,000 years ago. That description is more applicable now than ever before. तुम क्या कह रहा है? One Sankar. You understand the word one Sankar? Do we have it now? This country. Anji? This country. Every country. One Sankar खाली ये नहीं है कि किसी इंग्लिशमैन ने हिंदुस्तानी से शादी कर ली या ब्राह्मण ने उससे कर ली शूद्र से. One Sankar means unwanted children. कोई फोकस है कि हम बच्चे पैदा किए क्योंकि मैं माँ बाप ने कहा या एक करना है काम निमटा. और उसमें क्या लिखता है अर्जुन, क्या लिखता है? सोसाइटी विल गो टू हेल. कहीं हेवन है किसी जगह, कुवैत में या हिंदुस्तान में या अमेरिका में है? Children are shooting their grandparents. माँ बाप को भी नहीं, अब grandparents ने क्या किया बताओ? They do not know what love is. Why? Because the seniors are to be blamed. But they're not. वो कहते हैं कि seniors की क्या रोल है? They have to train. Traditions, संस्कार. हम पढ़ा रहे हैं वो. So he's giving that. I mean, when you look at that and you discuss it, you say, yeah, they've not even crossed the first chapter. It is as relevant today, or more so than 5,000 years ago. So how can you say Gita is not relevant? Yes. One lecture I was hearing, this is also a holy book, which starts with Dhritarashtra Vasa. So usually everyone watches. Then there will be Bangla, then the book will start. But here directly it comes to Dhritarashtra Vasa. So Dhritarashtra means like who is attached with the children. And attached with his Kingdom. And this is a society. So this is exactly meant for this society. Here, there's a very good point. The other thing is, what is the traditional name of this chapter? Arjun Vishad Yuga. What does Vishad mean?
Lamentation. Depression. 40% of the entire society in the world today is depressed. We are all doing depression yoga. Vishali. Okay, then how does the second chapter start? What is Krishna saying? Contents. This is Huh? summarization. In the, No, अरे तुम बहुत आगे चल मेरी लेवल पर बात कर मेरा गुरु है सचिन नाम कहते हैं गोपाल गुरु सतीश गुरु वो कहते हैं कि where have these impurities come upon? That is the second part of the lecture. Second lecture tomorrow. Please come. Hare Krishna. Hare Krishna.